Hello everyone, my name is Dr. Sonar Rajpal. Today I am going to explain what is baking soda and its property. The chemical name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate. Its chemical formula is NaHCO3. Another name is sodium bicarbonate and its pH is 8.5, means it is more than 7, so it will behave like a base. And it is also used in the kitchen for making crispy pakoras. And for the preparation of this baking soda, we need to require four things: sodium chloride, NaCl, water, ammonia, NH3, and carbon dioxide. Whenever we are mixing all these four together, it will lead to the formation of sodium hydrogen carbonate, which is a baking soda, and ammonium chloride, NH4Cl, as a byproduct is formed. And you all know that aqueous solution of NaCl and water is called brine, which I already explained in my previous video. And what are the properties of this baking soda? Actually, it is a salt, and you can say it is a basic salt. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट इज मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग acid and base together. So here the acid is weak acid and the base used is strong base. और जब भी strong base और weak acid आपस में combine करते हैं, no doubt salt is formed, but उसका जो property होता है वो एक base की तरह होता है और उस salt को हम basic salt बोलते हैं. और बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट है, बट इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट because it is made up of strong base and weak acid, and the strong base here is sodium hydroxide and the weak acid here is carbonic acid. So in a way, I just want to repeat again, sodium bicarbonate baking soda is a basic salt and it behave like a mild base, and it is white crystals and it is sparingly soluble in water. And in terms of heat, whenever we are heating this baking soda, it produces sodium carbonate, which is also a base, or you can say basic salt. And you all know that base are bitter in taste, and as a byproduct carbon dioxide gas is formed and water is formed. Now I am going to explain what are the uses of baking soda. Baking soda, it is used to make baking powder. You all are aware, you all have heard about baking powder. Now I'm going to tell what this baking powder made up of. जो बेकिंग पाउडर होता है बेटा, उसका टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है. इट हैज़ बेकिंग सोडा एंड ऑल्सो माइल्ड एडिबल एसिड इज प्रेजेंट. इट कैन बी टार्ट्रिक एसिड एंड इट कैन बी सिट्रिक एसिड. जो भी बेकिंग पाउडर होता है उसमें टू कंपोनेंट्स होता है, एक बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड. यू कैन से इट इज़ अ टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड. एंड बोथ दिस बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग केक एंड ब्रेड्स. बट if baking soda is used to make cake alone, then it will give a bitter taste to the cake. स्टूडेंट्स, जब भी हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए, केक तो अच्छा बनता है, स्पॉन्जीनेस भी होती है, सॉफ्टनेस भी होती है, बट वो केक बिटर होता है, खाने में कड़वा होता है. एंड यू नो वाई इट इज़ सो? द रीज़न इज़ बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट विच इज़ अ बेस and which gives bitter taste to the cake. Carbon dioxide gas makes the cake spongy, soft. So uska texture wise it is good, but taste wise it is not good if we are using baking soda exclusively. But if baking powder is used, which is a mixture of baking soda and mild edible acid, और जब भी हम केक में बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो केक का टेक्सचर्स बहुत अच्छा होता है, स्पॉन्जीनेस भी बहुत अच्छी होती है, एज अ टेस्ट वाइज इट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज द केक फॉर्म्ड बाय यूजिंग बेकिंग पाउडर इट इज़ नॉट बिटर इन टेस्ट. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज
बेकिंग पाउडर मैंने अभी भी बताया, बेकिंग पाउडर इज़ मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। और जब भी हम बेकिंग पाउडर केक में यूज़ करते हैं और जब हम उस केक को हीट करते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच इज़ अ बेस, नो डाउट इट इज़ अ बिटर, and carbon dioxide gas is produced and water is produced, and this carbon dioxide gas make the cake spongy or you can say soft। और जो भी आपका बेस बनता है सोडियम कार्बोनेट विच मेक्स द केक बिटर, बट उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? जो बेकिंग पाउडर में माइल्ड एडिबल एसिड होता है। जो भी माइल्ड एडिबल एसिड होता है, इट कैन बी टार्ट्रिक एसिड, it can neutralize the base that is sodium carbonate which can be produced by heating baking soda which is present in the baking powder। so उसके कारण बेटा क्या होता है, जब भी आप बेकिंग पाउडर डालोगे तो आपका केक बिटर नहीं बनेगा। so in the above case again I am explaining, the sodium carbonate which is a base produced by using baking powder which can make the cake bitter, it can be neutralized by the mild edible acid which is present in the baking powder and forms sodium tartrate salt. And the softness of the cake is due to the carbon dioxide gas which is produced as a byproduct. And one more thing I would like to add on, due to the production of this carbon dioxide gas as a byproduct on heating baking soda or you can say baking powder, this carbon dioxide gas is also used to extinguish fire। so, जो भी बेटा जब भी हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू extinguish fire। and the baking soda, another property of the baking soda, it is acting like an antacid because I already explained it is a basic salt, it will act like a base or it is a mild base, so it will neutralize the acidity of the digestive system due to its basic nature। तो ये एंटा एसिड वो होता है बेटा जब भी हमें कभी एसिडिटी होता है और वेन एवर वी आर गोइंग टू कंज्यूम दिस बेकिंग सोडा, क्योंकि एक माइल्ड बेस है तो ये हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिक नेचर जो हमारा गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड बिकॉज इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन आर digestive system due to its basic nature। and this baking soda is used as a soda acid fire extinguisher because due to the production of CO2 when we are heating this baking soda, and this CO2 जो होता है ये आग को बुझाने में बेटा काम करता है। so in conclusion I want to say baking soda is a sodium hydrogen carbonate and the baking powder is a mixture of baking soda and mild edible acid which is a tartaric acid or citric acid, and both these are used to extinguish fire and to make cake and bread। and baking soda is a mild base with pH more than 7, or this is also used as antacid which I already explained above। thank you। if you like my video, please subscribe my channel for more science video, science classes at the rate Dr. Sonal Rajpal 123।